So, dear students, good morning. Now I am going to start the air conditioning. This is the unit 4th. This unit is very important. After completion of this unit, I will complete the remaining part of the unit 3, that is refrigerants. That is basically a theory part, but air conditioning is very important part of the RAC. And before discuss adiabatic mixing of two air streams, you have to understand the concept of air conditioning. Air conditioning means maintenance of a proper temperature and humidity content in the atmospheric air. एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी एयर है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल कंट्रोल करना है, उसमें टेम्परेचर का लेवल कंट्रोल करना है. जैसे मैं गर्मी के दिनों में जो बाहर का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है, कहीं कहीं पर जो 60 डिग्री चला जाता है. तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए, जो हमारे ह्यूमन के लिए सही नहीं है. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 60 डिग्री 50 डिग्री पे हम काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमें ह्यूमिडिटी का लेवल और टेम्परेचर का लेवल जो है वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और उसको एक विद इन कम्फर्ट जोन में हमें लाना पड़ेगा जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए टॉलरेबल हो. तो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री के आसपास रहता है थ्रू आउट द ईयर, 12 महीना, चाहे बाहर सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो. हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भगवान ने ऐसा बनाया है, इट इज़ ए गॉड गिफ्टेड, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं बदलता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो. सो यू हैव टू मेंटेन द आउटसाइड टेम्परेचर, दैट इज़ योर एम्बिएंट टेम्परेचर with respect to your body temperature. So you have to control the humidity level and also the temperature level. Otherwise you will feel a sensation in your body, and there may be some sweating in your body and you may be uncomfortable feeling. Therefore, to provide the pleasure and to provide a suitable condition, suitable atmosphere and a healthy atmosphere, you have to control the humidity and the temperature level. So it is the branch of physics